Is my screen visible to everyone? स्क्रीन सबको दिख रही है क्या? No, sir. No. No, sir. Okay, wait. सब present हो रहा है but screen नहीं दिख रही. Black. एक मिनट. Yes, sir. Yes, sir. अभी स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, sir. Okay. My voice is clear? Yes, sir. Okay. Everyone, please write down the heading as system bus. स्क्रीन दिख रही है, आवाज भी? सर वॉइस ब्रेक हो रही है. Manpreet is there? Sir, voice is breaking. Like initially it was. अभी वॉइस ब्रेक हो रही है? No, sir. अभी ओके नाउ अभी 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 क्लियरिटी है आवाज में? आवाज ब्रेक हो रही है मेरी? आवाज ब्रेक हो रही है अभी? No, sir. No, sir. अभी ठीक है. ओके, हाँ ठीक है. ओके, नाउ आई वांट एवरीवन टू राइट डाउन द हेडिंग एज सिस्टम बस. टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सिस्टम बस and then how the system bus is going to help us.
Okay. Now when you talk about the system bus, your microprocessor or your microcontroller or your microcomputer, you take any of this particular the devices, okay, or the system, they will contain these three types of buses. So the first one is address bus, then second one is data bus, and the third one is your control bus. The third one is your control bus. Okay. So whenever you talk about the system bus, you should understand these buses are mostly database, address bus, and control bus. So what are the system bus and what are the function of each and every buses, we will see now. Now whenever you talk about the accessing of the memory, मैंने आपको बताया था कि your central processing unit, your CPU, let me show you on the other page, that whenever you talk about your CPU or microprocessor, if it wants to access your ROM or it wants to access your RAM, why it will access RAM? Because the data is present in the RAM. Why it will access your ROM? Because your instruction because your instruction, or you can say your binary code of an instruction, is present in the ROM. Okay, binary instruction is present in the ROM. So whenever your instruction is present in the ROM, or whenever you want to access the data in the RAM, then your CPU has to access those data or the instruction. So how it is going to access? It is going to access first by using the address bus. Now there is an address bus. Now when you talk about the address bus, these are nothing but the group of wires. Okay. If you talk about address bus or data bus or control bus, they are the group of wires. They are the group of wires. Physically, it is a group of 8 wires or 16 wires or more wires. Okay. Depending upon which microprocessor you are talking about or which microcontroller you are talking about. Depending upon that, you will have the different the group of wires. It can be 8 wires, it can be 16 wires, it can be 32 wires. Okay. Now when you talk about this address bus, what it will do, this address bus, now this is the address bus. The address bus will carry the address of this location. Suppose I want to access the instruction present at this address location. Okay. So the address of this location will be carried in the address bus. That is why the name is given as an address bus. So address bus is only responsible to carry the address of that particular memory location. It can be ROM or it can be RAM. अभी मेरा एक डेटा है जो ये लोकेशन पे है, तो ये लोकेशन का जो एड्रेस है, that will be carried in the address bus. Okay. Now what is the direction of the address bus? This is unidirectional. Unidirectional बोले तो एक ही डायरेक्शन पे उसका डायरेक्शन होता है. So I can say that the direction of the address bus is from CPU towards ROM or RAM. तो इसका एड्रेस का जो ये रहेगा डायरेक्शन, वो CPU से लेके टुवर्ड्स ROM या फिर CPU से लेके टुवर्ड्स RAM. Yes. So this is called as unidirectional. दूसरी बात, मैंने ऐसा क्यों बनाया, मैंने सिंगल वायर क्यों नहीं बनाया? बिकॉज अगर मैं सिंगल ये बनाता हूं तो it signifies there is a single wire. But already I have told you the address bus is a group of wires. It can be 8, it can be 16, or it can be 32, depending upon which microcontroller we are using, depending upon which microprocessor we are using. Okay. तो इसलिए मैंने सिंगल लाइन नहीं बनाया, मैंने ऐसा बनाया. Okay. So address bus is responsible to carry the address of the memory location. Now the next thing is, what about the data bus? अब suppose मुझे ये RAM location इस पे, suppose there is a data XYZ,
वो XYZ डेटा मुझे सीपीयू के रजिस्टर में लाना है, सीपीयू के रजिस्टर में लाना है। आपको पता है सीपीयू के अंदर रजिस्टर होता है विच इज रेस्पॉन्सिबल टू टेम्पररी स्टोर द डेटा। अब वो डेटा मुझे XYZ डेटा मुझे रैम में से उठा के रजिस्टर पे लाना है। तो सबसे पहली बात है कि वो XYZ कौन से एड्रेस पे है। सो दैट एड्रेस लोकेशन इज पुट अप इन द एड्रेस बस। तो वो एड्रेस लोकेशन एड्रेस बस से वो पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएगा। CPU knows that XYZ is present at which address location. So that address will be first loaded on the address bus. Once that address is loaded, then it will identify XYZ. And once XYZ is identified, this XYZ will be loaded on the data bus. Will be loaded on the data bus. Will be loaded on the data bus. So this XYZ will be loaded on the data bus. So this is called as a data bus. इसलिए उसको नाम दिया है डेटा, because it is responsible to carry the data. The same thing applies for ROM also. अभी आपके मैंने कल आपको बताया था कि there are instructions. ये प्रोग्राम में suppose 5 instructions are there. तो ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का बाइनरी कोड will be present in the ROM. सेकेंड इंस्ट्रक्शन का बाइनरी कोड will be present in the ROM. वो ये पांचों के बाइनरी इंस्ट्रक्शंस आर प्रेजेंट इन द ROM, और ROM में से मुझे उठा के कहाँ पे लाना है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे लाना है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहाँ पे है, आपके सीपीयू में। ये भी हमने कल पढ़ा है। तो ये पांचों के पांचों इंस्ट्रक्शन बाइनरी कोड जो ROM में प्रेजेंट है वो उठा के मुझे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे लाना है, दैट इज IR। तो वो भी काम मेरा डेटा बस करता है, वो भी काम मेरा डेटा बस करता है। So data bus, it is helpful to carry the data from the RAM as well as the binary coded instructions present from the ROM. तो इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है the data will carry from both the directions, so it is omnidirectional, both the directions. तो यहाँ पे भी मैंने एक ऐसा बनाया और यहाँ पे भी मैंने ऐसा बनाया। Now why so? Sometimes I require to, suppose मैंने दो नंबर का ऐड किया, suppose A plus B will give you C. So A आप रैम से लोगे, B आप रैम से लोगे, और आपका जो रिजल्ट आता है C, वो आपको फिर से एक मेमोरी रैम के एक मेमोरी लोकेशन पे आपको स्टोर करना है। That C will be also stored in the RAM. So in that case your C will be flown in this particular data, और जिस लोकेशन पे आपको स्टोर करना है वहां पे जाके C स्टोर हो जाएगा। और A और B का क्या है, A और B ऑलरेडी मेरे रैम में है, वहां से मुझे उठा के मुझे CPU में लाना है। CPU में क्यों लाना है, बिकॉज आई हैव टू परफॉर्म A plus B। तो मेरा A plus B का ऑपरेशन कहाँ पे होगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में होगा, ALU में, जो हमने कल पढ़ा था। तो A रैम में है, B रैम में है, वहां से उठाने का काम डेटा बस करता है, और फ्लो कहाँ से है, रैम टूवर्ड्स CPU। एडिशन होने के बाद जो रिजल्ट होता है वो C, दैट C इज टेम्परेरीली स्टोर्ड इन द रजिस्टर। और अगर मुझे चाहिए कि वो रैम में स्टोर करना है, देन फॉर दैट आई हैव टू राइट डाउन सम इंस्ट्रक्शन। तो वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद ये जो C मेरा जो आंसर रिजल्ट है, दैट विल बी मूव्ड फ्रॉम द सेम डेटा बस and it will be stored in the RAM location. That is why the directional is in both the directions, okay. ROM के लिए भी वही है ROM के लिए भी वही है, लेकिन अगर हम देखे the direction from ROM towards the CPU, हम कभी ROM में कुछ नहीं लिख सकते, because ROM stands for read only memory. We can only read the memory, we cannot write the memory. As far as RAM is concerned, it is readable, we can read as well as we can write. तो डेटा का जो बस का जो डायरेक्शन है वो both the direction है, if I consider RAM. But if I consider ROM, the direction is from ROM towards the CPU, because only we can read the ROM, we cannot write the ROM. As we cannot write the ROM, the direction the database direction cannot be from CPU towards the ROM. I hope you understood this. Address bus and data bus. Any question?
एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो आपको तुरंत बोलना है यस और नो, ठीक है? सो I have explained the address bus, I have explained the data bus. Now comes the control bus. Now comes the control bus. Okay, अब वही है, डेटा बस को भी मैंने ऐसा बनाया, सिंगल लाइन नहीं बनाया. That is the reason because data bus is also the group of wires. डेटा बस भी 8 बिट का होता है, 8 बिट का होता है, 16 बिट का होता है. आपके सिलेबस में we will be talking about the microcontroller 8051. So as far as 8051 is concerned, it is a 16 bit microcontroller. ये जो 16 bit microcontroller है ना, इसका क्या मतलब है? That thing also you try to understand here. That thing also you try to understand now. Now whenever you say, हाँ, yes. So direction of address bus ROM के towards क्यों है? Because हम लोग तो read करते हैं ना, write थोड़ी ना करते हैं. तो towards अपना CPU रहना चाहिए ना? एक मिनट. The direction of address. Address bus. हाँ, तो direction of address bus will be always from CPU towards the ROM, because address bus में हमारा address location full होता है. एड्रेस बस से हमारा एड्रेस जाता है. सपोज एक इंस्ट्रक्शन का बाइनरी कोड ये लोकेशन पे है और ये लोकेशन का एड्रेस है सपोज XYZ, तो XYZ मेरे एड्रेस बस में फ्लो होगा ताकि मुझे पता चलेगा कि ये एड्रेस से मुझे इंस्ट्रक्शन को उठाना है और उसको रीड करना है. तो एड्रेस बस पे XYZ फ्लो करेगा और जब आइडेंटिफाई होगा कि XYZ लोकेशन पे ये बाइनरी कोड है और ये बाइनरी कोड फिर आपके डेटा बस से it will flow from data bus towards the CPU. So your instruction binary code will be loaded on the data bus and it will be towards the CPU. तो ये जो मैं डेटा बस बनाऊंगा ना, तो उसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा, फ्रॉम ROM towards the CPU. तो यहाँ पे हेड नहीं रहेगा, ऐसा यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ ऐसा रहेगा और डायरेक्शन सिर्फ यहाँ पे रहेगा. So it is one direction only, that is from ROM towards the CPU. I am talking about the data bus. Data bus का direction ROM towards the CPU. Address bus का direction from CPU towards the ROM. From CPU towards the ROM. अभी समझा? Yes sir. हाँ, तो एड्रेस बस का हमेशा डायरेक्शन CPU से टुवर्ड्स द ROM या फिर RAM होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एड्रेस फ्लोट होता है टुवर्ड्स द RAM एंड ROM. लेकिन डेटा बस में क्या होता है, एज फार एज RAM इज कंसर्न्ड, डेटा कैन बी रिटर्न एज वेल एज रेड फ्रॉम द RAM, but that is not possible in ROM. The data can be only read, so that is why the direction of the data bus is from ROM towards the CPU and not vice versa. Is it fine? Yes sir. Okay. Now I was talking about your 8051. Now before I explain you about the control bus, I have to explain you that whenever you talk about any microcontroller, let me take an example of 8051 because this is in your syllabus. 8051 microcontroller is of 16 bit. Is of 16 bit. 8085 एक microprocessor है. This is your microcontroller 8051. This is your microprocessor 8085. This is of 8 bit. This is of 8 bit. स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता कि सर 16 बिट का क्या मतलब है और 8 बिट का क्या मतलब है, या फिर हम जब बोलते हैं कि ये प्रोसेसर 16 बिट का है. कोई मुझे बता सकता है, आप लोग जो लैपटॉप यूज कर रहे हो, मैं अगर पूछता हूँ आपको कि आपका प्रोसेसर कितना बिट का है, कैन व्हाट इज योर आंसर? 32. यस, 32, 64. हाँ, किसी का 16, कोई 16 बोलेगा, किसी का 32 बोलेगा, कोई 64 बोलेगा. तो आपको पता है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? आप जब बोलते हो कि मेरा प्रोसेसर 16 बिट का है, मेरा प्रोसेसर 32 बिट का है, मेरा प्रोसेसर 64 बिट का है, तो उसका क्या मतलब है?
Sir, data bus are of 32 or 64 bits. You are partially right. You are partially right. और कोई बता सकता है? Number of buses are 64, 32. Number of buses are of 64. Not exactly. और कोई बता सकता है? अच्छा, मैं आपको अगर दूसरा पूछता हूँ क्वेश्चन, if you compare 32 bit of processor and 64 bit of processor, which is more faster? 64. 64. Okay. 64 Obviously, 64 is more, the speed is more. अभी कोई बता सकता है कि दोनों का डिफरेंस क्या है? या फिर More processing power. processing power? Yes, you are right. You are near to the answer. Processing power. Yes. सर वन टाइम में 64 64 बिट डेटा फ्लो करेगा और वो 32 ही करेगा. हाँ, yes, that is very close to the answer. I will give you the explanation. Now, when you talk about 16 bit of processor या फिर 16 bit of microcontroller, it means the important thing is that your ALU, your arithmetic and logical unit, ALU, can process that much of data in a single time. That much of data in a single time. इसका मतलब अगर ये 16 बिट का मेरा माइक्रो कंट्रोलर है, सपोज मैं अगर 8051 की बात लेता हूं, तो 16 बिट ऑफ डेटा कैन बी प्रोसेस्ड एट अ सिंगल टाइम इन योर ALU. ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने दो 16 बिट का एडिशन करना है, इफ आई हैव टू डू द 16 बिट ऑफ एडिशन, आई कैन परफॉर्म द 16 बिट ऑफ एडिशन इन अ सिंगल टाइम. एक टाइम में ही मैं दोनों का 16 बिट का ऑपरेशन कर सकता हूं. वही अगर मैं 8051 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर अगर यूज कर रहा हूं और मुझे 32 बिट्स के ऑपरेशन करने हैं, तो वो केस में क्या होगा? पहले 16 बिट का ऑपरेशन होगा और बाद में रिमेनिंग 16 का ऑपरेशन होगा. इसका मतलब 32 बिट को एट अ टाइम मैं ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज दैट इज ए लिमिटेशन. आपका माइक्रो कंट्रोलर 16 बिट का है और आप ऑपरेशन 32 बिट का कर रहे हो, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. 32 बिट का स्प्लिट होगा 16-16, तो पहले 16 बिट का ऑपरेशन होगा और बाद में रिमेनिंग 16 का ऑपरेशन होगा. दैट इज अ लिमिटेशन इफ यू गो विथ 16 बिट. हाँ, अगर आपके पास माइक्रो कंट्रोलर 32 बिट का है, देन yes, in a single go you can carry out the operation of 32 bit at a time. So you should say, whenever you talk about मेरा प्रोसेसर 16 बिट का है, 32 बिट का है, you should say that your ALU handles that much of bit at a time. That operation can be performed on a 16 bit or 32 bit or 64 at a time. Okay, ये हो गया ALU. हम दूसरे तरह से ये कहते हैं, now this is the actual answer. लेकिन यूजुअली क्या होता है, आपका ALU अगर 16 बिट पे प्रोसेस कर रहा है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट योर डेटा बस इज आल्सो ऑफ 16 बिट. यूजुअली ये देखने को मिलता है कि डेटा बस साइज और ALU का ऑपरेशन जितने बिट पे होता है वो दोनों सेम ही होते हैं. ये क्यों? वैसे यूजुअली ऐसा क्यों होता है? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? यूजुअली ऐसा क्यों होता है? यूजुअली इन द सेंस 100% ऐसा है. कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? अभी मैंने आपको बताया एड्रेस बस और डेटा बस, वो लॉजिक यूज करके कोई मुझे बता सकता है? सर 16 बिट का डेटा सेम टाइम पे प्रोसेस करना रहेगा तो सेम टाइम पे आना भी चाहिए ना. यस, वेरी गुड. यस, दैट इज राइट आंसर. यस, आपका अगर ये सीपीयू है, सीपीयू में जहाँ पे आपका ALU है और ALU में आपको अगर 16 बिट का डेटा प्रोसेस करना है, तो 16 बिट का डेटा आपके डेटा बस में तो उसमें तो आना चाहिए ना एट ए टाइम. तो फिर फायदा क्या रहेगा? तो आपका डेटा बस हैंडलिंग कैपेसिटी क्या है उसकी? 16 बिट की है. तभी तो इसमें ALU में 16 बिट जाएगा, और जब 16 बिट ALU में जब जाएगा तभी तो ALU 16 बिट पे ऑपरेट कर पाएगा. यस, दैट इज द राइट आंसर. सो मोस्टली 100% ALU साइज एज वेल एज डेटा बस साइज आर ऑल सेम. ओके, कभी कभी ये भी होता है, लोग ये भी बोलते हैं कि सर एड्रेस बस का साइज 16 है इसलिए प्रोसेसर 16 बिट का कहा जाता है. ये नहीं है, दैट इज अ रॉन्ग आंसर. कभी डेटा बस 16 बिट का होता है तो एड्रेस बस आपका कभी 32 बिट का होता है, ऐसा भी होता है. ओके, सो नो वेयर एड्रेस बस एंड डेटा बस
related. Okay, they may be different or they may be same. They may be different or they may be same, but you cannot correlate that your प्रोसेसर जो 16 बिट का होता है या फिर 32 बिट का होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द एड्रेस बस साइज. नो, बट यू कैन से डेटा बस साइज इज ऑफ 16 बिट इफ द प्रोसेसर इज ऑफ 16 बिट. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई आपको बोलता है कि प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर 32 बिट का है, इसका क्या मतलब है, तो यू शुड गिव योर एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ ALU. You should give your explanation in terms of ALU. In that case, you should not say about the data bus. No. हाँ, that is understood कि अगर ALU 16 है तो data bus भी 16 रहेगा. But directly, that is indirect way. But directly you cannot say because of data bus size, your microcontroller का size उतना है. No, it is only because the processing time in the ALU. Is it clear now? Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now I will be talking about the control bus. I will be talking about the control bus. Now to explain about the control bus, you know, फिर से मैं बनाता हूँ. This is your CPU. This is your CPU. Okay. Then in the microprocessor block diagram, we have seen there is a separate RAM. There is a separate ROM. Even there is a separate IO devices. There are separate IO devices, or you can say IO port. IO devices, or you can say IO port. See, IO port, IO devices, or IO peripheral devices, they are all same. Okay, they are all same. So when your CPU wants to connect to the ROM or RAM or IO devices, okay, then to read or write the data. अभी RAM में अगर मैं बात करता हूँ तो you can read as well as write. मैं जब IO device की बात करता हूँ तो as far as input device is concerned, then we are reading the data from input device. और जब output device की जब बात आती है, that means we are writing into the output device. Input device reading, example keyboard, mouse. Output device we are writing, that means monitor. So whenever you have to access your memory, अभी मैं memory general में बोल रहा हूँ, तो memory can be RAM or ROM, or if I want to access my IO devices, so in that case CPU को बताना पड़ता है कि आप memory को read कर रहे हो या फिर आप IO device को read कर रहे हो. Okay, so for that CPU will generate 3 control bus. CPU will generate 3 control bus. अभी यहाँ पे actually 3 wires है. There are 3 wires. Actually there are 3 wires. First wire is RD, that is read. Second wire is WR, that is write. And third wire is M/IO. M/IO. So try to understand what is the meaning of this. Try to understand what is the meaning of this. This is important. This is important. So 3 control buses hai. Okay, there are 3 control buses. Actually I will not say this as a bus. हाँ, एक काम कर सकता हूँ मैं कि ये तीनों को मिला के एक बस बोल सकता हूँ मैं. Yes, I can say that. So this bus consists of 3 wires. 3 wires. One wire is called as RD, second wire is called as WR, and third wire is called as M/IO. So whenever you want to read the data, RD this will be high, this will be high, this will be active, this will be active. Whenever you want to write, this will be active, this will be active. And whenever you want to access memory or IO, then in that case this will be active, this will be active, this will be active. Okay, मैं इसको आपको अलग से और बताता हूँ.
So if I'm talking about, suppose this is memory and this is your IO device and this is your CPU. So the control buses are 1, 2 and 3. This is RD, this is W, this is WR and this is your M/IO. To be more specific, मैं देखो क्या लिख रहा हूं, M/IO bar, M/IO bar. Now I will take an example now. See here all of you. Suppose if I want to read the memory, RD bar, this will be high and I am accessing the memory. That is why this pin will be high. अभी ये high होगा only because, can you see here, it is M/IO bar. Bar is there. IO bar का मतलब होता है active low. अगर ये pin high है, that means we are accessing the memory. अगर ये pin low है, that means I am accessing my IO device. IO device, because IO is active low. IO is active low. So take the different possibilities. If I want to read the memory, this will be high. This will be high. If I want to write the memory, this will be high. This will be high. If I want to read the IO device, this will be high. This will be low. This will be low. If I want to write the IO device, this will be high. WR will be high. Just a minute. Yes, yes, this will be high as well as this will be low. This will be low. एक मिनट. Just give me 2 minutes. Just give me 2 minutes, I will come back.
यस, एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, स्क्रीन दिख रहा है? Screen is visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So I was talking about the control bus. Just a minute. So I was talking about the control bus. So in the control bus, we have three important signals. That is read. In short, it is called as RD. Write. In short, it is called as WR. And the third one is M/IO. M/IO. The M/IO bar. M/IO bar. That is memory or IO device. Memory or IO device. Okay. So depending upon this, uh, now let me tell you how is your signals generated, how the signals are generated. Okay, how the signals are generated. Now suppose this is your CPU. Now suppose this is your CPU. Here is your memory and here is your IO devices. Here is your IO devices. Now when your CPU wants to access your memory, that means if it wants to write the data into the memory, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले कंट्रोल सिग्नल्स एक्टिवेट होते हैं. तो आई एम सो मेरा टास्क क्या है? राइटिंग द डेटा इनटू मेमोरी. राइटिंग डेटा इनटू मेमोरी. सो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कंट्रोल सिग्नल्स एक्टिवेट होते. आई एम एक्सप्लेनिंग यू द स्टेप्स. I am explaining the steps in general that is applicable for memory as well as applicable for IO devices. The example I have taken, if you want to write the data into the memory, so the control signals will be activated. So the RD will be activated. Sorry, you want to write down the data. So WR will be activated. And we have to access the memory. So it is M/IO bar. So this will be also activated. So CPU WR को एक्टिवेट करता है और M/IO बार को एक्टिवेट करता है. दैट मीन्स तब पता चलता है कि आई हैव टू एक्सेस द मेमोरी एंड आई हैव टू राइट डाउन द मेमोरी. बाद में CPU एड्रेस बस के थ्रू जिस मेमोरी में लोकेशन पे लिखना है वो एड्रेस इस एड्रेस बस पे डालता है. दैट एड्रेस विल बी लोडेड इनटू दिस एड्रेस बस and depending upon that address the location is finalized कि ये लोकेशन पे लिखना है. ये लोकेशन फाइनल होने के बाद then comes the data bus and then this data bus, using this data bus you will be writing down at this memory location the data बोलो या फिर आपको जो कुछ लिखना है. Now here I am talking about the memory और मैं लिख रहा हूं. So this memory will be RAM and it will not be wrong because I am writing down into the memory. You cannot write down in the ROM, but you can write down in the RAM. So specifically I am talking about the RAM memory. So these are the steps which will take place. First step, control signals activate WR and M/IO bar. Second, the address where the data has to be stored that will be loaded into the address bus. Once the address is identified, then the data which I have to store at that particular memory address location that will be loaded into the database, and from the database the data will be loaded into that particular memory address location. I hope this is clear now to everyone. Any question, any doubt? Any question, any doubt? No, sir.
सब क्लियर हो गया अभी यहाँ पे? व्हाट इज अ डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस एंड द एग्जांपल? Yes, sir. Okay, okay. Now we will proceed further. We will proceed further now. Now, when you talk about, now this is clear. Now we have talked about the system bus. You have understood the system bus. Now we will proceed. We will proceed. मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? Screen is visible? Yes, sir. Okay. Yes. Now see here, this is the block diagram which already we have studied. Okay. Now here, can any one of you tell me this is a block diagram of a microprocessor or a microcontroller? Microcontroller. Microcontroller. Yes, it is a microcontroller. If you see carefully, here you will be able to see there is a microprocessor unit. Okay, microprocessor unit. And this microprocessor unit, or you can say this is a CPU. This is connected with the memory and IO ports. Along with that, we have the timer. These are the other things. These are the other things. Okay, so this is a microcontroller unit. This is a microcontroller unit. Okay, now this is a microcontroller unit. And always you remember that microprocessor अलग से काम नहीं करता. They want the supporting other memory as well as IO port. Okay, so memory जब मैं microprocessor की जब बात करता हूँ तो उसके साथ बाकी की चीजें भी आती है. लेकिन microcontroller, as I have told you, that is the microcomputer on a system, on a chip. Microcomputer on a chip. So on a chip, you will be able to see everything: microprocessor, memory, IO ports, and all other supporting devices. Okay, so that is the meaning. Now, when you talk about yes, now microprocessor already we have studied. In the microprocessor contains your ALU, register array, control unit. This is a in short. लेकिन मैंने जो आपको डिटेल में बताया था कल, so that thing you can have in your microprocessor block diagram. Okay, जो कल हमने लिया था, if the question is asked, that can be included. This is in short. Yes, now come to the memory. Now I was talking about the memory. See here now, pay attention. Now whenever you talk about the memory, मैंने आपको कल बताया था कि memory consists of different locations. It consists of different locations. Okay, now this whole is a memory. This whole is a memory, and these are the memory locations. These are the memory locations. These are the memory locations. Now if I ask you, what is the size of the memory location? What is the size of the memory location? ये फिगर देखने के बाद एक बात क्लियर है. क्या बात क्लियर है? कि the size of the memory location, single memory location, is of 8 bit. It is of 8 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bit. 8 bit. 8 bit. So the size of the memory location is of 8 bit. The size of each memory location is of 8 bit. Okay, it is of 8 bit. So each location consisting of 8 bit, and there are how many locations? There are total 16 locations, and the location name is given as REG0, REG1, REG2, REG3, REG15. So total there are 16 locations. Pay attention, I am explaining you the memory. It can be RAM or it can be ROM.
So there are 16 locations. Each location is of 8 bit. Each location is of 8 bit. Now to store the data into the location, we use the data bus. Can you see the data bus is given as D0 to D7? D0 to D7. तो आपका जो डेटा बस है वो 8 bit of data लाएगा और that can store at each location. Okay, that can store at each location. Now if your data bus की size अगर 16 bit है, अगर data bus की size अगर 16 bit है, तो it can carry 8 bit as well as it can carry 16 bit. लेकिन उससे ज्यादा नहीं, 16 bit से ज्यादा कैरी नहीं कर सकता आपका डेटा बस. सपोज यू अज्यूम कि आपका डेटा बस 16 bit कैरी कर रहा है. To store my 16 bit in the memory location, how many locations you will require? Memory locations you will require to store 16 bit? Your answer? Your answer? Am I audible? Sir, 2 memory location, na? Yes, you require 2 memory locations. Good. Because a single memory location will store only 8 bit. If my database is carrying 16 bit of data, you will require 2 memory locations. एक memory location में 8, remaining 8 bit second memory location. And if your data bus is carrying 8 bit of data, then only 1 memory location is sufficient. Okay. So here the data is given as D0 to D7. D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Okay. And see the addresses. See the addresses. The addresses are 000 से लेके 111. 000 से लेके 1111. Okay. So these are the addresses. Suppose मुझे डेटा ये लोकेशन पे स्टोर करना है. ये लोकेशन का एड्रेस देखो क्या है, 0110. 0110. Okay. Now my question is to identify these addresses, how many address bit you require? How many address bit you require? Any one of you? How many address you require? या फिर मुझे एक बात बताओ, I have 16 locations. I have 16 locations. So how many bit of addresses are sufficient to identify 16 locations? 4. 4. 4. Obviously 4. Can we go with 3? Can we go with 3? No, because 2 to the power of 3 is how much? 8. 8. So 2 to the power of 4 is how much? 16. 16. Yes. So I would require 4 address lines. Can you see here 4 address lines? A0, A1, A2 and A3. A0, A1, A2 and A3. So to access my 16 locations, I'm now concluding now. I am concluding. Pay attention. I am summarizing. मैं क्या summarize कर रहा हूँ? You have 16 location of addresses. To address 16 locations, you would require 4 address lines. That is why it is 2 to the power of 4 is equals to 16. 2 to the power of 4 is equals to 16. So to address 16 locations, you require 4 address lines. So that 2 to the power of 4 is equals to 16. Okay. So here what I have to explain you that 16 locations and each location of 8 bit. Each location is of 8 bit. Each location is of 8 bit. So if each location is of 8 bit, then can any one of you tell me how many total bits are there in total 16 locations? 128 bits. 128 bits. 128 bits. 128 bits. Now, if I ask you, tell me the size of this memory, what is your answer? 16 byte. 16? Byte. 16 byte. 16 byte. Yes, that is right. 16 byte. How 16 byte? Because each location is of 8 bit and 8 bit is equals to 1 byte. Therefore, 16 byte. 16 byte.
Everyone agree to this? Everyone agree to this? Everyone sir. agree to this? Yes, sir. Yes. Yes. Now, how do you get this 16 byte? How do you get this 16 byte? Can any one of you tell me? So Yes, by 16 looking at this. memory location and into हाँ, बोलो, बोलो. so 16 memory location into 8 bits in each memory location will give you 128 byte. Sorry, Okay. bits. हाँ. So 128 bits is nothing but 16 bytes. Am I right? Am I right? Yes, sir. हाँ. That ये सब हमको पता चल रहा है क्योंकि हम ये मेमोरी को देख रहे हैं. ठीक है ना? लेकिन अगर मुझे कोई बोलता है कि I have these many of address bits, and if they ask me, tell me the memory size. So can I say by using the information of address bit, I will be getting the size of the memory. I will be getting the size of the memory. For example, here you are using 4 address bits. Here you are using 4 address bits. So can I say 2 to the power of 4 is equals to 16. So this 16 is nothing but 16 byte. Yes or no? Yes or no? Yes. Yes. If I am using 8 bit of address, and if I ask you how much total memory size it will access by using 8 bit of address, your answer would be I'm waiting for your answer. 256. 256 कहाँ से आया? 2 to the power of 8 is equals to how much? 256. Yes, 256 byte. So can I comment now? Can I comment that depending upon the number of bits of address, you will have the size of the memory which you can access? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes. Now at the last, if I have 16 bit of address, और अगर मैं बोलता हूँ कि I am using 16 bit of address bus, how much maximum memory size I can access? Your answer? So 65,536. Yes, that is 2 to the power of 16 equals to 65536 bytes. 65536 bytes of memory. So you have understood. Now. You have understood that the memory size, how much memory size you can access, that depends upon dash. Fill in the blanks. Data bus. Address. Data bus nahi, address bus. Yes. Address. Address. Yes. So that is the last conclusion. The maximum memory size which you can access depends upon dash. That is depends upon your address bus. अगर address bus का size है 4 bit, then maximum 16 byte of data of memory you can access. If your address bit is of 8 bit, then 256 byte of memory address you can access. And if you have 16 bit of address bus, then 65536 bytes of memory you can access. I hope this is clear now. Yes, sir. Any question? Please पूछो मुझे. कुछ डाउट है तो पूछो मुझे. Is it clear?
Speak Yes, out. sir. Okay. Okay. Now we have talked about the memory. आप लोगों को memory भी समझ में आई है. Okay. So let me take this. We will take the next now this one in this. Yes, now we'll be talking about the two important aspect. That is your microcontroller can be divided. Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. So this thing already we have studied now. ये मैंने आपको अभी बताया ये सब. Now we will be proceeding to understand yes, this one. The memory architecture. I want everyone to write down as a heading memory architecture. Write down everyone the memory architecture, and we'll be having the memory architecture. The classification of microcontroller is mainly based on the organization of a program and data memory. So depending upon the organization of the memory, we have one Neumann architecture and Harvard architecture. So I'm going to explain you this one Neumann architecture and Harvard architecture. So pay attention now. सबने लिखा memory architecture, one Neumann and Harvard. सबने लिखा? Everyone has written? Yes or Yes, no? Now we will be talking about this. Now, if this is your CPU and you have a memory, you have a memory. Now here you see the memory. This is your CPU and you have a memory. This memory is your data and program memory. Data and program memory. Data and program memory. Now remember this block contains data as well as program memory. There are no two separate memories for data as well as program. And you have a CPU Now in this, I'll be explaining you the von Neumann architecture. The first architecture is von Neumann architecture. This is also called as Princeton architecture. This is also called as Princeton architecture, Princeton.
Princeton Architecture. So in this architecture, you'll be able to see that your data memory and program memory is in the same block, and your CPU wants to access this data or program memory. So in that case, the data bus is a single bus, your address is a separate one, and your control bus. So this is your data bus, this is your address bus, and this is your control bus. This is your control bus. Now here, if you see carefully, if I want to address the data, I will be using the same data bus. And if I want to address the program, I will be using the same data bus. So here I do not have the provision to address the data as well as the program memory simultaneously. I do not have the provision to access the data from the data memory as well as instruction or the binary code from the program memory at a time, because there is a single data bus. तो आप तो एक टाइम पे एक ही डेटा ले सकते हो, डेटा बस डेटा मेमोरी से लो या फिर प्रोग्राम मेमोरी से लो, बट बोथ एट अ टाइम इज नॉट पॉसिबल. ओके, इवन एड्रेस ऑल्सो, एड्रेस का वही है. एड्रेस का क्या है, मुझे अगर डेटा मेमोरी को एक्सेस करना है तो वो डेटा मेमोरी का एड्रेस बस पे डालो, एंड देन यू टेक द डेटा फ्रॉम द डेटा बस. या फिर अगर प्रोग्राम मेमोरी से लेना है तो प्रोग्राम मेमोरी का जो एड्रेस है वो एड्रेस बस पे डालो, एंड देन यू टेक दैट फ्रॉम द डेटा बस. ओके, सो वन एट अ टाइम इज पॉसिबल इन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर और प्रिंसटन आर्किटेक्चर. To give an example of this architecture, Motorola 68H C11. This microcontroller is based upon von Neumann architecture. Okay, तो ये Motorola 68H C11 microcontroller में this type of architecture can be seen. Okay, now there are some drawbacks also in this. What is the drawback? Can anyone of you tell me what is the drawback? The biggest drawback? What could be the biggest drawback? More number of buses. Not exactly. Yes. एक्सेसिंग टाइम ज्यादा हो जाएगा. हाँ, एक्सेसिंग टाइम ज्यादा होता है ना. स्लोअर एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, क्योंकि अगर डेटा से डेटा निकालना है तो पहले एड्रेस डाल के डेटा निकालो, लेकिन मुझे अगर डेटा को भी एक्सेस करना है और प्रोग्राम मेमोरी को भी एक्सेस करना है तो वो नहीं कर पाऊंगा. दैट इज व्हाई एक्सेसिंग टाइम इज मोर इन दिस. सो दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक. एंड इफ यू सी द डिजाइन इज सिंपल. Design is simple. Okay, so access time required is more. That is a slower execution time, because data और program memory at a time मैं नहीं कर सकता हूँ. पहले तो डेटा करो या फिर प्रोग्राम करो, लेकिन दोनों at a time नहीं कर सकता. So that is the biggest drawback. So to overcome that, we have the other architecture which is called as Harvard architecture. And the example is our 8051, जो हमारे सिलेबस में है माइक्रोकंट्रोलर 8051, that follows Harvard architecture. Now see the Harvard architecture. Here you have a CPU, here you have a RAM, here you have a ROM, here in between you have a CPU. You have a separate data bus to access the RAM. You have a separate data bus to access the ROM. You have a separate data bus to access, you have a separate address bus. So this is my data bus. This is my address bus. And this is my control bus. So this is my address bus and this is my control bus.
This is called as a Harvard architecture. Don't you think that we have overcome the problem of slower execution in this? Don't you think that we have overcome the problem of slower execution in this? Yes or no? Yes, sir. Yes, because अगर मुझे रैम को एक्सेस करना है तो उसके लिए सेपरेट है, क्या है? डेटा एड्रेस कंट्रोल. मुझे रोम को एक्सेस करना है तो उसके लिए सेपरेट है, डेटा एड्रेस और कंट्रोल. दोनों को मैं एट अ टाइम कर सकता हूँ. यस और नो? यस, I can access RAM as well as ROM at a time. At a time. Okay, that means I can provide parallel execution of RAM as well as ROM because of having separate data, separate address, and separate control buses. Now, what is the disadvantage? The disadvantage is that there are more hardware required because of using two sets of buses. यहाँ पे भी एक अलग बस, यहाँ पे भी अलग, यहाँ पे भी अलग एड्रेस बस, यहाँ पे भी अलग एड्रेस बस, यहाँ पे अलग कंट्रोल बस और यहाँ पे अलग कंट्रोल बस. So the hardware is required is more, and the design is complex as compared with the von Neumann architecture. I hope this is clear now. I hope this is clear now. सर Yes, sir. हाँ. डाटा बस एक ही तरफ आएगा ना रोम का? Yes, बोल. क्या क्या? डाटा बस रोम के एक ही तरफ आएगा ना? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है. यस, दैट इज अ गुड ऑब्जर्वेशन. बराबर है, ये एक ही तरफ आएगा तो ये नहीं रहेगा, ये एक ही तरफ. अब बराबर है? अब बराबर है? हाँ हाँ, यस, गुड ऑब्जर्वेशन. तो रोम का डेटा टुवर्ड सीपीयू रहेगा बिकॉज वी कैन ओनली रीड रोम, वी कैन नॉट राइट. गुड. शैल वी प्रोसीड फर्दर नाउ? शैल वी प्रोसीड फर्दर? किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो. अगर प्रॉब्लम नहीं तो जस्ट से दैट सर यू कैन प्रोसीड. Yes, sir. You can proceed. Okay, we will proceed now. So can you see on the screen? I was talking about this. So this is your von Neumann architecture and this is your Harvard. This is your Harvard architecture. Okay. So explanation is already given. The ebook already I have shared with you all. Please see the ebook and accordingly go through the theory. Now for today's we will see the last part. For today we will see the last part, and that part is this. Yes. Yes. Now your classification of microcontroller can be classified depending upon the organization of a program and data memory. तो वो हमने देखा था वॉन न्यूमन और हार्वर्ड. अभी दूसरा क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटीज एंड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन. दिस इज इंपॉर्टेंट. कैपेबिलिटीज एंड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस. Okay, so we have already seen the classification of microcontroller based upon organization of a program and data memory. प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी अगर एक ही इसमें है तो वो वॉन न्यूमन, और प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी अलग अलग है तो वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर. तो वो हिसाब से हमने माइक्रो कंट्रोलर का क्लासिफिकेशन देखा. एक दूसरा क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटीज एंड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस. Okay, so the first one is CISC. See the full form of CISC, complex instruction set computer. Complex instruction set computer, that is called as CISC. And the other one is RISC, reduced instruction set computer. Reduced instruction set computer. Now here, what are the important points? Pay attention. All of you pay attention. I'm just going to read out. Okay. In the early days of the computer development, most of the program development work was done in assembly language because high-level language were not developed. Therefore, CPU designers tried to make instructions that will perform as much work as possible, which in turn has led to development of instructions with many addressing modes for arithmetic, logical and data transfer. आपका जो CPU होता है ना, it is mostly
concerned with to carry out three operations. One, data transfer. Second, it can be for to carry out arithmetic operation, or it can carry out logical operation. तो ये तीनों ऑपरेशन आपकी सीपीयू करता है. Okay, now we have to write down the instructions to carry out either data transfer, or to carry out arithmetic operation, or to carry out logical operation. Okay, now in the 6 architecture, you have, see here, the 6 architecture require less number of instructions per program at the cost of number of cycles per instruction. This is very important. This is very important line. Okay, this is very important line. Let me explain you that line here now. Now, if I have to do a plus b equals to, if I have to do a plus b, for this you have written, suppose 5 instructions, 1, 2, 3, 4, 5. So this becomes your one program. This becomes your one program. Okay, this becomes your one program. Suppose under your CISC, you have written the same. You have written this. You have solved the same a plus b problem by using only 3 instructions. By using only 3 instructions. Okay. Now here you are using only 3 instructions, and here you are using 5 instructions. This is under the 6 I am talking about. 6 में हमने सिर्फ 3 instruction ही लिखे to carry out a plus b. So in 6 you require less number of instructions. But the problem is that to execute the single instruction, ये instruction को execute करने के लिए you require many number of cycles. That means number of cycles to execute the single instruction would be more. Or in other words, you will say number of cycles per instruction will be more. Okay, मैंने क्या बोला? Number of cycles. Now to explain about this number of cycles, let me give an example कि अगर मुझे कौन सा भी, suppose ये एक single instruction है, ये instruction को execute करने के लिए, this is very important. I am explaining you. I want everyone to pay attention. This is very important. I am explaining you. ये एक single instruction है और ये अगर execute करना है तो 3 steps में होते हैं. पहला step क्या होता है? पहला step होता है instruction fetch. सेकेंड स्टेप होता है इंस्ट्रक्शन डिकोड, और थर्ड स्टेप होता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट. Again I am repeating, I am explaining you what do you mean by number of cycles. Under the number of cycles I am explaining you, अगर एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए ये 3 स्टेप्स करने पड़ते हैं. पहले वाला होता है इंस्ट्रक्शन फेच, सेकेंड वाला होता है इंस्ट्रक्शन डिकोड, थर्ड वाला होता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फेच, व्हाट डू यू मीन बाय डिकोड, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूट? ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दिस. मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. What do you mean by fetch? What do you mean by decode? What do you mean by execute? But already we have studied this. Okay. Now fetching का मतलब क्या होता है? Instruction fetching means reading instruction from memory. Which memory? ROM. Reading instruction from ROM. Now during this cycle, actually ये जो चल रहा है ना instruction fetching, this is a cycle. This is one cycle. Instruction fetching करना, this is one cycle. Now during this cycle, CPU sends address of the instruction to a memory through address bus. Instruction जब fetching होता है ना, तब CPU क्या करता है? Address भेजता है of that instruction
टू अ मेमोरी थ्रू एड्रेस बस। बाद में एड्रेस बस एड्रेस भेजने के बाद फिर क्या होता है, द मेमोरी रेस्पॉन्स बाय सेंडिंग इंस्ट्रक्शन बाइट टू द सीपीयू वेर इट इज स्टोर इन अंडरलाइन। यू विल गिव मी द आंसर, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ऑलरेडी मैंने आपको ये पढ़ा है। अभी मेमोरी आपका जो रॉम का एड्रेस है जिसपे आपका वो इंस्ट्रक्शन है, वो एड्रेस लोकेशन मिलने के बाद मेमोरी क्या करता है, मेमोरी रेस्पॉन्स बाय सेंडिंग इंस्ट्रक्शन बाइट या फिर बाइनरी कोड टू द सीपीयू वेयर इट इज स्टोर इन डैश, वेयर इट इज स्टोर इन डैश। Where it is stored in dash. Am I audible? Instruction register. Very good. Very good. Instruction register. Instruction register. तो इंस्ट्रक्शन फेच एक साइकिल है जिसमें क्या क्या हो रहा है, आई एम रीडिंग आउट, आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन। रीडिंग आउट करने से अच्छा मैं यहाँ पे पढ़ा आपको दिखाता हूँ। Just a minute. Yes. Can you see here now? Instruction fetch. So what is written there? See, instruction fetch means reading instruction from memory. During this cycle, CPU sends address to the instruction to a memory through address bus. The memory responds by sending instruction byte or word. Instruction byte means 8-bit and word means 16-bit. ठीक है ना? To the CPU where it is held in instruction register. Yes, where it is held in instruction register. This is the first cycle. Third cycle देखो क्या है, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, ये देखो, द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए यू रिक्वायर 3 साइकिल्स। द फर्स्ट साइकिल इज इंस्ट्रक्शन फेच। सी व्हाट इज द सेकंड साइकिल, इंस्ट्रक्शन डिकोड। Decoding means interpreting the instruction and to determine sequence of actions that should be taken to perform the operation specified by an instruction. ये जो instruction है ये क्या बोल रहा है वो हिसाब से काम करना। लेकिन कब कर सकते हैं, when we decode that instruction byte. Okay, when we decode that instruction byte. So decoding means interpreting the instruction. ये इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करना, दैट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन डिकोड। दैट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन डिकोड। तो ये सेकंड साइकिल हुई। थर्ड साइकिल देखो क्या होता है, थर्ड साइकिल में एक्चुअली फिर वो एग्जीक्यूट करता है वो इंस्ट्रक्शन। इन एग्जीक्यूशन साइकिल द सीपीयू रिसीव्स इनपुट डेटा ईदर फ्रॉम मेमोरी और रजिस्टर, द रिजल्ट इज कैलकुलेटेड and finally it is stored back into the memory or register as specified in the instruction. All these operations are controlled by control signals generated by a decoder in a predetermined sequence. मेरा इंस्ट्रक्शन सपोज था a plus b, तो a कहाँ से लेना, b कहाँ से लेना और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करना, ये सब एग्जीक्यूशन में होता है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में। बिकॉज इट इज रिटन देयर द सीपीयू रिसीव्स इनपुट डेटा ईदर फ्रॉम मेमोरी और रजिस्टर। ये a मेरा मेमोरी में है या रजिस्टर में है, b मेरा मेमोरी में है या रजिस्टर में है, वो दैट विल बी स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ओके, then the result is calculated and finally stored into back into the memory or register. a plus b का सपोज रिजल्ट c है, तो c को कहाँ पे स्टोर करना है, रजिस्टर में ही करना है या फिर बैक टू द मेमोरी में करना है, वो सब डिपेंड्स अपॉन जो इंस्ट्रक्शन आपने लिखा है। So that is called as execution. That is called as execution. So always remember there are 3 cycles when you execute the program. Whenever you execute the instruction, number 1 instruction fetch,
इंस्ट्रक्शन बाइट मेमोरी में से लेके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ला के रखना। सेकेंड, इंस्ट्रक्शन डिकोड, वो इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करना। ओके, थर्ड वाला, वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, एक्चुअल ऑपरेशन करना। जहाँ पे अभी यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया, a प्लस बी ऑपरेट करना है, ए कहाँ से लेना, बी कहाँ से लेना, और रिजल्ट जो आता है सी, वो कहाँ पे स्टोर करना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। I hope you have understood this. Any question? Any question? No, sir. Everyone, सबको समझ में आया है? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Before I proceed further, let me read the sentence. Thus, the above three cycles represent overall processing required for a single instruction. एक instruction को perform करने के लिए you require 3 cycles, which is usually referred as instruction cycle. Which is referred as instruction cycle. Which is referred as instruction cycle. All instructions in a program are executed sequentially by repeating same 3 cycles. By same 3 cycles. तो वही जो चीजें हैं मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. So can I say these 3 steps are nothing but this is called as instruction cycle. This is called as instruction cycle. एक प्रोग्राम में 3 इंस्ट्रक्शंस है. पहला इंस्ट्रक्शन साइकिल एग्जीक्यूट करने के लिए 1 2 3, फिर से सेकेंड इंस्ट्रक्शन साइकिल एग्जीक्यूट करने के लिए 1 2 3, फिर से थर्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल एग्जीक्यूट करने के लिए 1 2 3. और आपका जो इंस्ट्रक्शन आपने जो प्रोग्राम लिखा है सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है. इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद लास्ट वाला. सिक्वेंशियल. ऐसा नहीं कि ये होगा उसके बाद डायरेक्ट लास्ट वाला होगा. नो, यू विल गो सिक्वेंशियल. So your instruction cycle consists of 3 different cycles. Okay. Now come to this one. So in the CISC, I have told you that in this you will be having the less instructions to carry out the same program, but here the number of cycles would be more. The number of cycles would be more. Okay. The CISC architecture will have complex instruction set where the instructions can be where the task can be performed with the minimum number of instructions, but to perform the same program, the number of cycles per instruction would be more. The number of cycles per instructions would be more. That is about the 6. And the same opposite to this is your RISC, where the program size will be more. वही अगर a plus b करना है तो program size will be more. लेकिन हर एक इंस्ट्रक्शन का नंबर ऑफ साइकिल्स विल बी रिड्यूस्ड. द नंबर ऑफ साइकिल्स विल बी रिड्यूस्ड. द नंबर ऑफ साइकिल्स विल बी रिड्यूस्ड. The number of cycles will be reduced. So the main difference between the 6 and the RISC is to execute the program, you will have minimum instructions, but the number of cycles will be more. Similarly, in the RISC, to perform the same operation, the number of instructions would be more, but to perform a single instruction, the cycles will be less. The number of cycles would be less. So these are the two basic, these are the main basic difference between the CISC and the RISC. The remaining differences we will see in the next lecture. I think we can stop for today. Next lecture में आपको मैं बताऊंगा more, the properties of the CISC and the more properties of the RISC. Any question? Any question? No, sir. Okay, I think we can stop for today. मनप्रीत अटेंडेंस हुआ क्या देखो. नहीं सर, नितिन सर ज्वाइन करेंगे अभी. अच्छा, नितिन सर अभी ज्वाइन करेंगे, लेकिन शायद नितिन सर को पता नहीं है. जस्ट अ मिनट. Yes sir, I have informed now. अच्छा, यू हैव इन्फॉर्म नितिन सर. Yes sir. ओके, नितिन सर ने ज्वाइन नहीं किया ना.
Otherwise, Manpreet, you can take oral attendance and you can inform Nitin sir. Or shall we wait for Nitin sir to join? Sir, he has joined. Acha, he has joined. Okay. Sir, attendance is taken. Okay, okay. Everyone can leave then. If you have any questions, you can stay back. Others can leave. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.